पावन पुण्य सवेरा, से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम
ना कल्याणी, लागी लगन कभी ना छूटे, लागी लगन कभी ना छूटे, कर लो लाख जतन, सखी रे मैंने पाए रे तीन रतन, सखी रे मैंने पाए रे तीन रतन, सखी रे मैंने पाए रे तीन रतन। एक बाबा एक मुरली एक मधुबन, सखी रे मैंने पाए रे तीन रतन, सखी रे मैंने पाए रे तीन रतन, सखी रे मैंने पाए रे तीन रतन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चले हम सभी अपने परम पिता जो परम शिक्षक बन करके हम बच्चों को रोज रोज पढ़ाने के लिए The Supreme Teacher देश से every day comes from the Supreme Abode, आते हैं from the faraway land, और हम बच्चे to we children, मीठे बच्चे कह करके and he addresses we children as sweet children, sweet children, और and teaches us. पढ़ाते पढ़ाते मीठे बच्चे And while teaching, कह करके and by saying sweet children, sweet children, मीठे मीठे पूजनीय Baba makes us worthy of worship, के समान Shri Lakshmi and Shri Narayan. देते हैं। अनेक बार हम बच्चों को बाबा ने इस पढ़ाई से Many a times, नंबरवार सतयुगी नई दुनिया के पदों को number wise, Baba has made us to claim the status of heaven, पढ़ा करके and every day Baba teaches again and again. भी हम बच्चे ईश्वरीय पढ़ाई की
And the more we imbibe godly study, the more we continue to achieve the status. So now we will listen to Baba's version. 1st February 2023. ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे The essence of today's Murli, Baba says, शब्द sweet children, मीठे बाप दादा का हम बच्चों के कान में sweetest Bab Dada addresses we children every day as sweet children. करते हुए And while experiencing the love, we will move further. मीठे बच्चे Baba says, sweet children, नजर किसी भी देहधारी के तरफ नहीं जानी चाहिए your vision should not be drawn to bodily beings. ये वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप है Because the Father, the incorporeal ocean of knowledge Himself, is the one who is teaching you. The Supreme Teacher is teaching you. की नजर भी बाप के तरफ ही होनी चाहिए प्रश्न है आज का ऊंच पद के लिए कौन सी एक मेहनत तुम बच्चे Question: गृहस्थ व्यवहार में रहकर के भी कर सकते हो which effort are you children able to make to attain a high status while living at home with your families? उत्तर है गृहस्थ व्यवहार में रहते Answer: ज्ञान की कटारी while living at home with your families, simply use the sword of knowledge. और अब बाबा कहते ज्ञान की कटारी चलाओ Baba says, simply use the sword of knowledge. Become spinners of the discus of self-realization. शंख ध्वनि करो देखो हम पूजनहार देवी देवताओं को हमारे अस्त्र शस्त्र Become spinners of the discus of self-realization and continue to blow the conch shell. चक्रधारी बनो Baba is speaking about all the 4 adornments that it has been given to Vishnu. Simply use this word of knowledge, become spinners of the discus of self-realization and continue to blow the conch shell. Remember the unlimited Father while walking and moving around and stay in that happiness and you will claim a high status. When we imbibe all of these things, we will claim a high status. This is the effort you have to make. योग से तुम्हें कौन सा The second question, what double benefit do you receive from having yoga? प्रश्न का उत्तर है एक तो जिस समय हम बाबा को याद करते हैं Answer: तो बाबा कहते हैं एक तो इस समय कोई विकर्म नहीं होता है one is that you don't perform any sinful actions at this time, हुए विकर्म विनाश हो जाते हैं and the other is that your past sins are absolved. गीत बजा है माता ओ माता Song: है सबकी Mother, Mother, you are the bestower of fortune for all. सत्संग व कॉलेज आदि जो होती है At spiritual gatherings and colleges, कौन पढ़ाते हैं you can see who is teaching you. पढ़ती है जिस्म पर At spiritual gatherings and colleges, you can see who is teaching you. Your vision falls on that body. कि फलाना प्रोफेसर पढ़ाते हैं At a college, you would say that such and such a professor is teaching you. सुनाते हैं At a spiritual gathering,
you would say that such and such a scholar is relating that knowledge. देहधारी पर नहीं जाती। Your vision falls on human beings. अपने तीसरे नेत्र Here, your vision doesn't fall on a bodily being. तो हमारी नजर And here, when we remember the Father and listen to the Murli, की निराकार परम पिता परमात्मा it is in your intellects that the incorporeal Supreme Father, the Supreme Soul, is speaking to you through this body, that is Brahma Baba. और बाप दादा Your intellects go to the Mother and Father, Bab Dada. ज्ञान सागर When children relate something, it is said that they are relating what they have heard from the Father, the ocean of knowledge. We listen to the true knowledge. माने सुनाया We say that the Supreme Father, the Supreme Teacher, the Supreme Soul teaches us, and that what we explain to you. कि फलाना ये वेद सुनाते हैं मनुष्यों को There is a difference. Whatever they hear at spiritual gatherings, they believe that so and so is relating that from the Vedas. People's vision falls on the status and the caste and creed of human beings. This one is a Hindu, this one is a Muslim. Their vision falls on that. हाथ के इशारे से बताएं हमारी दृष्टि कहाँ जाती है। Here your vision goes to Shiv Baba. शिव बाबा पढ़ाते हैं Shiv Baba is teaching you. नई दुनिया के लिए वर्षा देव The Father has now come to give you the inheritance of the future new world. तुमको स्वर्ग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा कहते हैं किसी की ये ताकत नहीं No one else can say, Children, I am teaching you Raj Yoga for heaven. के लिए तुमको राजयोग सिखलाना Nobody has the strength or to speak that I am teaching you Raj Yoga for heaven. But only the Supreme Father, the Supreme Soul, can say this. You also heard the song. से जगत The song is of the past. माना भाग्य विधाता Jagadamba was like that. आज भी याद करें तो भाग्य तो बनता ही है। Baba remembers Jagadamba. सौभाग्य She definitely created her fortune because there are her temples. लेकिन हम But people don't know who she was, how she came, or what fortune she created. परंतु वो कौन थी वो कैसे आई ऐसे जगत Jagadamba definitely created her fortune because there are her temples, but people don't know who she was, how she came, or what fortune she created. दुनिया वाले इन बातों को So there is the difference of day and night पढ़ाई between this study and those studies. फर्क है। यहाँ तुम समझते हो Here you understand that the ocean of knowledge, the Supreme Father, the Supreme Soul, is teaching you through the mouth of Brahma. भगवान The Father has come क्योंकि भगवान को ऊपर से दूर देश से यहाँ आकर के भक्तों को भक्ति का फल देना है। God definitely has to come from the faraway land to the devotees. Otherwise, why else would devotees remember God? तो क्यों याद करते Why else would devotees remember God? हो जाता है। It is wrong to say that all are God. तो बाबा कहते ये तो रॉन्ग हो जाती है बात। Baba says it is wrong to say that all are God. अपनी बात को सिद्ध करने के लिए Those who believe in the notion of omnipresence जोर देते हैं। use the force of 20 Niles to prove their notion. करना चाहते हैं ब्रेन वॉश करना चाहते हैं कि परमात्मा कण कण में सब They will have brainwash. परंतु
But your explanation is different. बच्चों को ही वर्षा It is only the children who receive the inheritance from the unlimited Father. और तुम्हारा सन्यासियों का है ही वैराग्य Sannyasis have the path of disinterest, the path of isolation. हक मिल न सके You can never receive a right to property from them. तो वर्षा लेने की बात तो खत्म हो जाती है वर्षा मिलता है हम बच्चों को We receive the inheritance or the property. ऊपर रहते हैं पिता हैं हम उनके पुत्र हैं तो हमको उनसे प्रॉपर्टी का हक प्राप्त From the Father we receive our inheritance. और उनको प्रॉपर्टी चाहती भी नहीं है They don't want property. या तो कहेंगे हमको सृष्टि पर आना ही नहीं या तो They would say that they don't want to come onto this world, or else they would say that they will go and merge into the light in the Brahma element. चाहते हैं हम सभी They don't want property. चाहते हैं You want the property of constant happiness. नर्क के धन दौलत में दुख है There is sorrow in the wealth and property of hell. कि यहाँ के धन दौलत में दुख है There is sorrow in the wealth and property of hell. होता क्या है अगर संपूर्ण धन जैसे ब्रह्मा बाबा ने बाबा को समर्पित कर दिया Just as Father Brahma surrendered everything to the Father, so do you have the courage to surrender everything? In this there will be number wise. परंतु चलन ऐसी गंदी चलते हैं Although some people are wealthy, their activity is very dirty and they simply continue to throw their money away uselessly. को भी और दुखी Their children then starve to death. है बेहद का पाप They make themselves के पास and their children unhappy. That one is the unlimited Father, दुखी हो and He sits here and explains to you children. तो है बेहद का पाप वो बैठ बच्चों को The unlimited Father sits here and explains to you children. पाप हैं जिनसे अल्पकाल के लिए वर्षा मिलता है There you have many different fathers from whom you receive a temporary inheritance. वो भी हद के राजा ही हो गए Although there are kings too, they are limited. अविनाशी Their happiness is limited and temporary. This unlimited Father comes to give you imperishable happiness. मालिक थे He explains that the people of Bharat who were double crowned were the masters of heaven. मालिक हैं अगर हम कहेंगे कि हम भी नर्क के मालिक हैं तो हाथ उठाएं And if we say that we are the masters of hell, those raise hand. खुश होते हैं Baba is very happy looking at all of you. You would all become the masters of heaven. तो ये तो बेहद का बाप अविनाशी सुख देने आए हैं समझाते हैं कि भारत The unlimited Father comes to give you imperishable happiness. He explains that the people of Bharat who were double crowned were the masters of heaven and that they have now become the masters of hell. There is sorrow in hell, but there aren't any such rivers of the extreme depths of hell or the river of poison as they have shown in the Garuda Purana. हानि होती है That is the punishment that has to be experienced. बातें सुनाते हैं Very dangerous words they mention in it. लिख दिए आगे तो Therefore, they have written those fearsome stories. वो अंग उनका काट In earlier days, the physical limb that someone would commit a crime with would be cut off. अगर हाथ They used to receive very severe punishment. पैरों से बुरा काम हुआ पैर काट डालेंगे बहुत कड़ी सजाएं मिलती
they used to receive very severe punishment. The punishment now isn't so severe. बड़ी नहीं है, वो तो बहुत ईजी है। The punishment of being hanged is not severe. प्राण निकल गए, That is very easy. नहीं रहती है, People even commit suicide very easily. परंतु हाथ काट डाले, पैर काट डाले, फिर सारी जिंदगी ऐसे बेसहारा If the hand is cut off, leg is cut off, then it will be considered to be a very severe punishment. बहुत खुशी से करते हैं और उनके तो पुस्तक भी निकले हुए हैं। They even quickly sacrifice themselves to Shiva or the deities. You know that when a soul is unhappy, he wants to shed his body and take another. People who commit suicide don't think in that way. करते हैं शिव पर They shed their bodies here and then take other dirty births here. बलि चढ़ जाते हैं। They don't have knowledge. आत्माएं दुखी होती हैं तो चाहती हैं कि एक शरीर छोड़कर जाकर दूसरा ले लेवे। They shed their bodies here and then take other dirty births here. कि हम जल्दी जाके They don't have knowledge. दूसरा शरीर ले, कोई नहीं चाहता। देखो बाप तो वाह वाह लेते ही जा रहे हो, लेते ही जा रहे हो। वो आपघात करने वाले ऐसे नहीं समझते हैं, वो तो यहाँ ही एक शरीर They simply finish off their bodies because of sorrow. ज्ञान तो है नहीं, They don't have knowledge. खत्म कर देते हैं। They simply finish off their bodies because of sorrow. पाते हैं Nevertheless, they still receive an unhappy birth. नई दुनिया के You know that you are becoming worthy for the new world. काम करने वालों में भी वैरायटी होती है। There is a variety among those who commit suicide. जैसे कोई कोई स्त्री पति के पीछे अपना शरीर होमती है। Some wives used to sacrifice their bodies when their husbands died. वो बात अलग That is a different matter. समझते हैं कि हम पति लोक में They believed that they would go to the same place where their husband has gone because they had heard that and many had done that already. फिर वो पहुंचे It is also written in the scriptures पीछे that she would go to the same place where her husband has gone. माना वहाँ उसको अपना पति प्राप्त होगा, She will think that she will go and attain her husband there. परंतु वो पति तो कामी ठहरा, वो पति मिल However, that husband would have been someone who indulged in the vices. पति तो कामी ठहरा, फिर भी इसे ही मृत्यु लोक And so he would have to come back here to the land of death. चिता पर बैठने By sitting on the pyre of knowledge, चले जाते। you go to heaven. ज्ञान चिता पर चढ़े हैं, You're all sitting on the pyre of knowledge. Are all of you sitting on the pyre of knowledge? चिता पर बैठे हैं, But are you sitting on the pyre of worry? You're all sitting on the pyre of knowledge. Is it not? अभी तुम बच्चे जानते हो You children now know that Jagadamba and Jagat Pita, who have become instruments for establishment, स्वर्ग में पालन will become the sustainers in heaven. लक्ष्मी नारायण बन करके और हमारी पालना करेंगे। And by becoming Sri Lakshmi and Narayan will sustain us. को कहा जाता है People don't know what the clan of Vishnu is. Vishnu is a resident of the subtle region. अभी तुम जानते हो And so, how could there be his clan? लक्ष्मी नारायण You now know that the dual form of Vishnu, Lakshmi and Narayan rule and give sustenance there. This is the pyre of knowledge. हम तो अपने पतियों के पति के साथ जाएंगे। You have yoga with that one, husband of all husbands. जो भी पत्नियां हैं उनके पति हैं, उन पतियों के भी पति
You have yoga with that one husband of all husbands. विश्व के मालिक, विश्व के पिता, विश्व के स्वामी, पतियों के पति, He is called the master of the world, और वो है the creator, the husband of all husbands. शिव बाबा। He is Shiv Baba, the husband of all husbands, वही पतियों का पति और पिताओं and the father of all fathers. को एक ही है। That one is everything. कहो, पिता कहो, सखा कहो, Mother, father, friend, beloved, whatever you may say, that one is everything. संबंध आ जाते हैं। All relationships are forged with him. में जो भी चाचे काके आदि तुम्हारे हैं, The father says, all the maternal and paternal uncles that you have now only give you advice for sorrow. वो मनुष्य मत होगी, इसीलिए दुख की ही राय That will be the dictates of the human beings. आसुरी मत ही देंगे। At this time, they would only give you devilish directions for the wrong path. सुल्टी मत दे, The unlimited Father comes and gives you children right directions. बैरिस्टर आदि बनो, For instance, your physical father may ask you to study at college and become a barrister. पढ़ाई करो और पढ़ाई करके आप बैरिस्टर बनो, तो ये तो कोई उल्टी मत नहीं Those directions are not wrong. होगी। नहीं, बाबा फिर इस मत के लिए कहते हैं कि शरीर निर्वाह, They are right for the livelihood of your bodies. ये तो राइट है, क्योंकि पढ़े लिखे होंगे They are right for the livelihood of your bodies. कर सकेंगे। If one will be educated very well, उतना तो पढ़ाई का पुरुषार्थ करना है। then उनके साथ साथ फिर they will have the livelihood of their bodies. You have to make that effort. निर्वाह अर्थ Together with that, you also have to make effort for the livelihood of your bodies for your future 21 births. ये ईश्वरीय पढ़ाई भी पढ़ो, You have to study that education and also study here. और शास्त्रों की You study for the livelihood of your bodies. निवृत्ति मार्ग वालों के The study of the scriptures is for the livelihood of those who are on the path of isolation. कर चले जाते हैं, तो फिर वो अपना Those on the path of isolation, they leave their homes and families. तो वो अपने शरीर निर्वाह And therefore they study the scriptures. सन्यासी भी They study those for their own livelihoods. 50 Sannyasis also earn for their livelihoods. Some earn 50 rupees, कश्मीर some earn 100, and some even earn 1000. When the king of Kashmir died, those of the Arya Samaj received so much money. सब देखा, सुना, अनुभव किया। Baba had practically seen everything. राजा मरा तो कितने पैसे मिल गए आर्य समाजियों आदि को। When the king of Kashmir died, those of the Arya Samaj received so much money. All of them do all of that for their own stomachs. There is no happiness without wealth. संपत्ति सुख के लिए होती है, If someone was wealth, का दुरुपयोग जो होता if someone has wealth, he can travel around in a car. धन है तो मोटरों आदि में घूमते हैं, If someone has wealth, he can travel around in a car. Earlier, sannyasis didn't adopt a renunciation for money. पड़ी होती थी, न परिवार की न संबंध की, बस चले जाते थे। इस Sannyasis would simply leave their home and family and go to the forest. They used to परिवार से तंग है, liberate themselves. मनुष्यों से तंग है, दुनिया से तंग है, दुख है, तो वो समझते थे हम छोड़कर जंगल में They would become distressed about their home and family and the world, and therefore they used to have renunciation. दुख से छूट नहीं सकते।
They would become tired of this world and free themselves. However, they cannot become free like that. Yes, they do remain pure. They support Bharat with the power of their purity. ये पवित्र They give happiness to Bharat in that way. महिमा करते बता Baba is singing the praise of the sannyasis. आदि निवृत्ति मार्ग वाले जो पवित्र रहते हैं, यदि ये पवित्र नहीं बनते, If the sannyasis didn't become pure, वैश्यालय Bharat would have become too much of a brothel, बिल्कुल विषय विकारों के वशीभूत वैश्यालय बन जाता। would be influenced by the vices. ये निवृत्ति मार्ग वाले भी One is of those on the path of isolation, and the other is of the Father who teaches purity. पवित्रता की धारणा कराते हैं। Baba also makes us to imbibe purity. वाली पवित्र Their purity is that of the path of isolation. प्रवृत्ति मार्ग की This purity is that of the family path. सब छोड़ दो, स्त्री के संग रहो ही नहीं, स्त्री का मुखड़ा देखो ही नहीं, तो वो निवृत्ति मार्ग की पवित्रता सिखलाते हैं। The path of isolation, there they teach रहते हुए to renounce vices, जैसे कीचड़ में कमल रहते but they leave their home and family. But this purity is that of the family path. There used to be the pure family path in Bharat. हम देवी देवताएं पवित्र थे, We were deities and were pure, पूरा आधा कल्प 5 विकारों but we have now become impure for a full half cycle. की विकार पवित्र नहीं बनाता। हाँ, इतना जरूर है कि उसमें मुख्य काम विकार में जाने से We have been becoming impure with the 5 vices. पवित्रता का कलंक काला दाग लग जाता है, परंतु टोटल संपूर्ण अपवित्रता The stain of 5 vices वशीभूत is in the soul. तो कही जाती है। माया ने थोड़ा थोड़ा Little by little, पूरा ही Maya has made you completely impure and sinful. ये बातें कोई भी No human being in the world knows how we become impure from being pure, even though they do understand that this world is impure. कि ये पतित दुनिया है। This is the impure world. की आयु 100 वर्ष है। For instance, if the lifespan of a building is 100 years, 50 वर्ष then for 50 years it would be said to be new, and for 50 years it would be said to be old. आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता जाता है। It continues to become old gradually. ऐसे है, It is the same for this world. सुख होता है, There is happiness in the completely new world. And then for half a cycle it becomes old. हम बच्चों को बाबा सिखलाते हैं, समझाते हैं। Very easily Baba explains to we children. में अथाह सुख है, It is remembered that there is a limitless happiness in the golden age. कोई वस्तु पदार्थ वहाँ अप्राप्त नहीं। There are no unattained or unattainments in the golden age. रावण दुख Then when the world becomes old, sorrow begins. Ravan causes sorrow. के 5 विषय विकार नारी की, तो वो होता है रावण। पतित रावण ने किया है, It was Ravan भूत बना whose effigy people born who made you impure. के जलाते हैं और प्रति वर्ष उसको बड़ा बड़ा बनाते He is burnt every year. दुश्मन है। He is a great enemy. अप्लाई किया कि रावण को न जलाया जाए, Someone made an application to the government क्योंकि that Ravan shouldn't be burnt रावण का शास्त्रों because many people अलग तरीके से पॉजिटिव वर्णन experience sorrow. कि वो बहुत विद्वान था और वो शिव भक्त था,
And the worldly people take Ravan in a positive way, that he was a scholar के ऊपर उसका कंट्रोल था, and he had the control over everyone, प्रभु का प्रेमी भी था, शिव का परम भक्त भी था. and he was also worshipping Shiva. समझते नहीं है None of the ministers etc. understand. का राज्य द्वापर युग से शुरू होता है. You now know that Ravan's kingdom begins in the Copper Age. जलाते It is in Bharat alone that people burn an effigy of Ravan. ये भक्ति और ये अज्ञान का The father explains this path of devotion, the path of ignorance, begins in the Copper Age. अब देखो जगदम्बा का गीत गाते हैं. There is the day through knowledge and the night through devotion. There was the song, Mother, O Mother, you are the bestower of fortune for all. कि सौभाग्य विधाता वो क्या Look, people sing songs of Jagadamba, मेला लगता but they don't understand how she is the bestower of fortune. है. कौन Such a big fair takes place, but they don't even know who Jagadamba is. को भी बहुत मानते In Bengal, they believe in Kali a great deal. हैं, परंतु जानते They also sacrifice themselves to her, but they don't know what the difference is between Kali and Jagadamba. काली और जगदम्बा में क्या फर्क है. काली जहाँ पर सभी बलि चढ़ाते किसकी, विषय और विकारों की. Goddess Kali means कल्याण the one who sacrifice themselves, विश्व का मालिक and Jagadamba means the one who fulfills everyone's desire. They show Jagadamba to be fair and Kali to be dark. बलि लेती है और ये जीवत दान देती है. Goddess Kali फिर गोरा दिखाते हैं, takes the life of everyone and Jagadamba donates life. काली को काला बना दिया है. They show Jagadamba to be fair and Kali to be dark. श्री लक्ष्मी बन When Jagadamba becomes Lakshmi, she is beautiful. जन्म लेते लेते Then after taking 84 births, बाबा कहते हैं Baba says, काली बन जाती. she becomes ugly. तो मनुष्य कितने मुंजे हुए People are so confused. अथवा अम्बा है तो एक ही. In fact, Kali and Amba are one and the same. लास्ट है उनका, जिस लास्ट जन्म में काली नाम से उनको याद करते. In the last birth, she is remembered as Kali and they sacrifice themselves to her. But Kali and Amba are one and the same. They don't know anything, and this is called blind faith. जगदम्बा थी, You children now know that the one who was Jagadamba in the past created the fortune of Bharat. बना रहे हो. You too are creating the fortune of Bharat. और नाम The name of the mothers is the main one. ऋषियों का भी माताओं The mothers also have to uplift the sannyasis. ये भी नूंद है. This too is fixed. परमात्मा ने डायरेक्शन दिया है. The Supreme Father, the Supreme Soul, has given the direction. Shoot arrows of knowledge at them. मिला है कि साधु संत महात्माओं The mothers are given the direction ज्ञान that the sages and the saints, the sannyasis, have to be shot arrows of knowledge. तो समझाती हूँ कि हमको ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं. When you children meet sannyasis, you explain that the Supreme Father, the Supreme Soul, the ocean of knowledge, He is teaching you. योग Tell them you are limited sannyasis, whereas we are unlimited ones. The Father teaches us Raj Yoga when your Hatha Yoga is about to end. Hatha Yoga and Raj Yoga cannot exist at the same time. ब्रह्मा का
When there is the day of Brahma, there is no night of Brahma. When there is heaven, there is no hell. टाइम कोई अब जास्ती नहीं है. So, not a lot of time now remains. ये बाबा बाबा ने शिव बाबा ने There is a very little time now. द्वारा उस समय कहा कि टाइम बहुत थोड़ा है. अब तो कितने वर्ष हो चुके. अब सोचें कितना समय बाकी बचा Now many years are passed. हैं बच्चे. Now only now व्यवहार में little time is left. कमल पुष्प The father says, children, while living at home with your families, live like a lotus. कुमारियां तो है ही पवित्र. It is Brahmins who have to live like a lotus. Kumaris are as pure as a lotus anyway. Baba says to those who indulge in vice, become pure. कुमार और कुमारियां भी पवित्र हैं ये गारंटी नहीं होती. Nowadays, the Kumars and Kumaris are pure. There is no guarantee of it. And therefore, God's direction is become pure. कमल फूल समान बनो. हर एक स्वदर्शन. While living at home with your families, become like a lotus. हाँ, ज्ञान संग बजाओ. सबको परमपिता परमात्मा का संदेश सुनाओ. Blow the conch shell of knowledge. कटारी चलाओ तो सबका बेड़ा पार हो. Each one of you has to become a spinner of the discus of self-realization. Blow the conch shell. Use the sword of knowledge and your boats will go across. It takes effort. जो चार बातें बाबा ने बताई ना, बाबा कहते बस You won't be able to claim such a high status without making effort. सदा सुख में रहे. While walking and moving around, maintain that happiness. Remember the Father. उनकी याद रहती है ना, कि सुख देते हैं उनकी याद रहती है. Someone who gives a lot of happiness is automatically remembered. रहती है ना. You now have to remember the unlimited Father. You now have to remember the unlimited Father. सबको देना. You have to give others his introduction. क्या समझाना. देखो बाबा हमको वो भी सिखाते, वो भी बताते. समझाना है. You have to explain to them तुम राज विद्या by studying for a worldly education in this birth. You will become a barrister for now. पढ़ते अथवा इम्तिहान Acha, for instance, if your life ends and you shed your body while studying or just after passing your examinations, the study would end here. लंदन गया, वहाँ मर पड़ा. Some may have passed their examination and gone to London and died there. In that case, the study would end there and then. और ये है That study is perishable. This study is imperishable. पढ़ते भी It is never destroyed. तो हमारी जो कमाई पढ़ाई से जमा Here, while studying, if we shed our body, नहीं होगी तो ये अविनाशी पढ़ाई है. we will not be losing anything. नहीं, We will definitely claim our inheritance. नई दुनिया में आकर You know that you will go and rule in the new world. वो है अल्पकाल का सुख. That is temporary happiness. सो भी जब नसीब में हो वो भी सबको And even that is only received if you have it in your fortune. जितना कर्म श्रेष्ठ किया उतना उनको The more one performs elevated action, the more he will be creating his own fortune. सड़ते हैं. निश्चित है You can't tell for how long it would last. Here it is certain. As soon as your examinations end, you will go and claim your fortune of the kingdom for 21 births. इम्तिहान पूरा हुआ और तुम जाकर के 21 जन्म का राज्य भाग्य लेंगे.
As soon as your examinations end, you will go and claim your fortune of the kingdom for 21 births. हद के बाद टीचर और गुरु से हद का वर्षा मिलता है। You only receive a limited inheritance from a limited father, teacher, and gurus. कि गुरु से शांति मिलती People think that they receive peace from their guru. However, there cannot be peace here. शांति धाम में Peace will be in the land of peace. धाम में ऑर्गन्स से काम करते करते शरीर थक जाते हैं। When a soul becomes tired from performing actions with his organs, he becomes detached from his body. The Father says, peace is your original religion. शांति है या फिर बाप को याद करें तो शांति है। If you remember the Father, there is peace. If you remember the land of peace and stabilize yourself there, then there will be peace. ऑर्गन्स है काम These are organs. If you don't want to do anything, then just sit down quietly. बाबा कहते तो शांत होके बैठ जाओ तो शांति का अनुभव करो। बस सोचो हम अशरीरी हैं। We are bodiless. मैं देह नहीं मैं विदेही। I am not the body, I am bodiless. योग लगाते हैं तो विकल्प And are having yoga with the Father so that our sins can be absolved. परंतु उससे विकल्प तो विनाश नहीं हो सकता। You might receive peace from a sannyasi, but your sins cannot be absolved by doing that. याद से ही होते Here, by remembering the Father, you will continue to become a conqueror of sinful actions. वो शांति में बैठे हैं Acha, करके विकर्म भी विनाश हो। those people sit in peace and their sins will perhaps be absolved. There would be double benefit. तो उनको डबल फायदा होगा। There would be double benefit. भी विनाश हो। The sins of the past are destroyed. इस योग बल के पुराने विकर्म किसी भी हालत में किसी के भी विनाश Under no circumstances can the past sins of anyone without the power of yoga be absolved. की मिली और हम उनको याद करते हमारे विकर्म भी विनाश होते हैं। When we remember the Father, our sins will be absolved. विनाश हुए कोई कमजोरी मिट गई कमी निकल गई आपको शांति आ गई। परंतु बाबा कहते हैं पुराने जो किए हुए पूर्व जन्म के विकर्म हैं वो तो किसी भी हालत में Baba says, नहीं हो under no circumstances can the past sins of anyone without the power of yoga be absolved. The ancient yoga of Bharat alone is remembered. नाश होते हैं और कोई उपाय ही नहीं। It is through this that the sins of many births are absolved. There is no other way. कौन सी वृद्धि This expansion now has to end. जो जनसंख्या वृद्धि को प्राप्त होती है वो बाबा कहते The expansion of the population बंद होनी now has to end. चाहती है कि वृद्धि जास्ती Even the government doesn't want too much expansion. कम करते हैं। We reduce the expansion so much. कितनी कम हो जाती है। We reduce the expansion so much. हम कितनी वृद्धि कम करते हैं। We reduce the expansion so much कितने होंगे। that very few will remain in the golden age. हम इतनी वृद्धि कम करते हैं जो वहाँ We reduce the expansion so much that very few will remain and all the rest will depart. की धाम में All the rest will go to the land of peace. की विनाश होगा। People understand that destruction will take place, समझते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा। but when they see the fighting stop, they wonder whether it will take place or not. नजरों के आगे
हुआ, विश्व युद्ध की Therefore, they quietened down. तैयार है, परंतु थोड़ी देरी है। The great destruction is ahead. बाबा कहते हैं तुम बच्चों के उस संकल्प की, जो हम सब मिल करके जब एक ही संकल्प करेंगे, When we have one thought खत्म that this old world has to be destroyed, then the new world will definitely come. तो समझते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि घड़ी में The father explains, children, very little time remains. Therefore, don't make any mistakes. समय बाकी थोड़ा है, The father explains, children, very little time remains. Therefore, don't make any mistakes. अच्छा, मेरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार to the sweetest, beloved, long lost, and now found children, love, remembrance, and good morning from the mother, the father, Bab Dada. The spiritual father says Namaste to the spiritual children. We spiritual children say good morning and Namaste to the spiritual father. धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें, Essence for dharana. शरीर से डिटैच हो, Essence for dharana. शरीर से डिटैच होंगे तो हम बाबा की याद में, Become detached from your body. तो शरीर से If we become detached from the body, we will remember the bodiless one. का अनुभव Become detached from your body, become bodiless, and experience a real peace. जीत बनाना है। Make yourself a conqueror of sinful actions by having remembrance of the Father. अविनाशी पढ़ाई पर In order to make your reward imperishable, pay full attention to this imperishable study. को छोड़कर एक बाप की सुलटी मत पर चलना है। Renounce following all wrong directions and only follow the right directions of the one Father. पर चलते हैं या उल्टी मत पर, We have to check ourselves whether we are following wrong directions or right directions. Are we following the dictates of our own mind or are we following the dictates of others? Or are we following Srimad? वो कहे गुस्सा कर, हम गुस्सा कर देते, काम कटारी चला देते, जो वो कहेगा वो कर लेते। तो बाबा कहते हैं Baba says, पर चलना है। वरदान never follow wrong directions and only follow the right directions of the one Father. The Father is the Father, Teacher, and Sadguru. Now we will listen to the blessing from Sadguru. तो मीठे मीठे बाप दादा सतगुरु के रूप में कहते हैं ऊंची स्टेज पर रह। अभी यहाँ स्टेज का मतलब जो ड्रामा का स्टेज होता है, May you stay in an elevated stage. जैसे ये स्टेज है, परंतु बाबा यहाँ इस स्टेज की बात नहीं करते। यहाँ स्टेज शब्द हमारी स्थिति, हमारी Stage doesn't mean the physical stage. Here Baba says, स्टेज पर रह, प्रकृति की हलचल you have to keep your elevated state. वाले May, की जीत may you stay in an elevated stage and beyond any effect of the upheaval of matter and become a conqueror of matter. और उससे जो नुकसान होता है तो वो नजरों से देखा नहीं जाता।
सहा भी कईयों से नहीं जाता। तो बाबा कहते हैं आगे चलकर आपकी नजरों के आगे भी प्रकृति के इन पांचों Baba says that there will be upheavals of the five elements in the future. You will see great loss. देखेंगे और You will see ये चिल्लाएं many people dying at one time. कहना होगा, परंतु There will be no armies at that time to save anybody. And if our stage will be elevated, we will not come under the influence of anything, and we will become the conquerors of matter. माया जीत तो बन रहे हो, You are becoming conquerors of Maya, but you must now also become conquerors of matter. होती है स्वभाव, उसको भी कहते हैं प्रकृति, और The nature is also called as the matter. तत्वों की The body, which is made up of five elements, is also called matter. शरीर पर भी जीत पहनो। Now we have to conquer on both. तो अब प्रकृति जीत भी बनो, Also become conquerors of matter, बहुत होनी because there is now be a lot of upheaval of matter. जीत पहनना शुरू कर दिया। अब प्रकृति की जीत, कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा, Sometimes water of the oceans will show its impact. जीत होंगे तो प्रकृति Sometimes the earth will show her impact. हिला नहीं सकती। If you are a conqueror of matter, no upheaval of matter will be able to shake you. ऊंची पहाड़ी You will observe every game as a detached observer. सदा ऊंची स्टेज पर रहो, Just as angels are shown high up on mountains, in the same way, उतना हलचल you angels also have to stay in an elevated stage, so that when you are high up, you automatically stay beyond any upheaval. सर्व आत्माओं को सहयोग की Slogan: अनुभूति कराना भी to give the experience of cooperation to all souls with your elevated vibrations is also tapasya. निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मावत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों 18/1/1969 से पहले उच्चारण की थी। ये Before 18 January 1969, Baba had spoken the elevated version, नियमित बी के विद्यार्थियों को सुनाने के लिए and the teachers have to speak those elevated versions in the class to the students. अतः इसका उपयोग या जब आप सुनाएं तो बहुत समझकर इसका उपयोग करें। तो प्रतिज्ञा, अभी समय बहुत थोड़ा है और काम बहुत करना है, इसलिए The point to become avyakt. Right now there is very little time and a lot of work has to be done. करके उठे, ध्यान से सुने, पीछे वाले भी और आगे वाले भी सभी। प्रतिज्ञा करो कि आज से ये पुराने संस्कार, ये व्यर्थ So make a firm promise to yourself that from today onwards you will never allow these old sanskars, these wasteful thoughts to arise. When you make such a firm promise, then you will get visible fruit, God will be revealed. और स्वमान स्वमान है मैं ज्ञान Today's self-respect. अर्जुन आत्मा हूँ, I am Arjuna, soul who acquires knowledge. को Churning प्रमाण कैसे बनाए, how to make oneself a visible proof, that is, how to become a sample. अभ्यास में क्या सोचेंगे, While in yoga practice, मस्तक
I am the jewel of the forehead seated on the forehead. रूप में स्थित हो Be stable in your own form and see yourself. समान एग्जाम्पल और सैंपल हूँ I am an example and sample equal to Father Brahma. होकर योगाभ्यास Be stable in this elevated self respect and practice yoga. ओम शांति। सभी भाई बहनों से निवेदन है, सभी सूचनाएं सुनकर और क्लासेस It is a request from all the brothers and sisters that you will listen to the program details for today. या बैठी होती है, कृपया सभा से कोई भी न उठे। सभी टीचर्स बहने ध्यान देंगे। All the teachers pay attention. आज विशेष क्लास होगा, There will be special classes for the teachers. योग रहेगा 10 to 10:30 meditation, 11:15 बजे 10:30 to 11:15. क्लास कराएंगे। Sister Geeta will give class. जीवन की जिम्मेवारियां महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मुंबई की Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana. ये क्लास रहेगा। All the teachers from this place will attend the class. तन्मयनी दादी जी और संतोष दीदी जी मिलेंगे। Sister Munni, Dadi Rathan Moini and Sister Santosh will meet आप हॉल नंबर all of you all. 87 में अभी से ही रख सकते हैं और आप सब आएंगे कॉन्फ्रेंस हॉल में। And everybody will be assembling in the conference hall. फिर से ध्यान से टीचर्स बहने सुने कि आज कॉन्फ्रेंस हॉल में 10 से 10:30 Today in the conference hall, you will be having your से 11:15 meditation, आदरणीय गीता दीदी जी हम सभी का क्लास कराएंगे। and Sister Geeta will give class for all the teachers. मेरी दादी जी, संतोष दीदी जी Sister Munni, Dadi Rathan Moini and Sister Santosh will meet all the teachers. हॉल नंबर 87 में रखेंगे। जो भी भाई बहने आज कल और इसके पहले से ही शांति वन में आए हुए हैं, Those brothers and sisters who have already come to Shantivan and haven't taken a godly gift from Baba's home, they will take the gift today only. Tomorrow is Baba's day, and tomorrow no one will get the gift. 5 से 5:30 बजे तक आपका योग रहेगा। 5:30 से 6:30 बजे तक कॉन्फ्रेंस हॉल में ही There will be yoga in a class in the conference hall. Sister Neha will give the class, सभी को ईश्वरीय सौगात and everybody will get the godly gift. अब दिनचर्या सुनेंगे डायमंड हॉल की। Now the program in the Diamond Hall, बजे तक योग 10 to 10:30 meditation, से 11:30 बजे तक 10:30 to 11:30. Sister Usha will give class. विषय रहेगा ब्राह्मण जीवन की विशेषता। The topic is the speciality of Brahmin life. क्लास रहेगा आदरणीय 11:30 to 12:30. Class by Sister Sheelu. और अमूल्य जीवन है। शाम को 5 The topic is Brahmin life is an invaluable life. And in the evening, there will be meditation 5 to 6 p.m. And at 6 p.m., Brother Raju, Murli department in charge, will give class. से 8 बजे तक हम सब संगठित रूप में And after the class, हॉल में ही योग करेंगे। we will all have yoga in the Diamond Hall. यात्रा भोजन से आप सभी के लिए सूचना है। वापसी जाने वाले अपनी यात्रा भोजन की पर्ची आज ही जमा करा दें। पर्ची जमा Those who will be leaving tomorrow, सुबह 9 they will बजे तक, शाम को 4 से 6 बजे तक। give their receipt in the journey food counter. माताओं के लिए विशेष सूचना है। गेट नंबर 1 के पास जीवी मोदी अस्पताल में 50 साल के ऊपर की माताओं के लिए
Those who are about 50 to 60 years, कैल्शियम the mothers, जांच करने की in order to have the checking of the सुबह 9 bones, से 1 बजे तक का समय morning 9 a.m. to 1 p.m. 3 बजे is the से 5 timing, बजे तक आप लाभ ले सकते and in the evening from 3 to 5 जिस you सेंटर can या take a benefit from the के hospital. VVBKIVV ईमेल आईडी अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं उस सेंटर या सब सेंटर की इंचार्ज बहने कृपया आनंद भवन में मीडिया ऑफिस में सुबह 9 से 12 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक आकर के मिले शंतनु भाई से। ज्ञान सरोवर माउंट आबू में इस वर्ष 5 से 9 मई तक होने वाली मीडिया कॉन्फ्रेंस के फोल्डर्स टीचर्स बहने या गाइड भाई बहने मीडिया 5th February to 9th February, there will be media department meeting, और ब्रह्मा and the media folder is ready. Anybody wants the media folder, you can get it from the media office. इस कोर्स को वैल्यू एजुकेशन The Manipur University has begun the PhD course, भी विद्यार्थी कर सकते हैं। and all the students can get the master degree. एजुकेशन ऑफिस प्रभु पसंद And in order to get more information, you can get it from Prabhu Prasad. सरोवर में सेवाधारी भाइयों की आवश्यकता है जो भी भाई ज्ञान सरोवर में सेवा के लिए रुकना चाहते Those brothers who will wish to stay in Gyan Sarovar for service, they will have to take the permission letter from their teachers. ऑफिस में संपर्क करें। मेडिकल विंग की मीटिंग आज सुबह 9:30 बजे से विश्राम भवन में The medical wing meeting will be in Vishram Bhavan. बहने मेडिकल विंग के मेंबर्स डॉक्टर्स Teachers, doctors, nurses, pharmacists, सेवाओं रुचि and those who are keeping interest in medical service can all assemble in Vishram Bhavan. आज शाम 4:30 बजे ट्रेनिंग सेंटर Today in the evening at 4 p.m. in Training Center Hall number 5, रखी गई है। समाज सेवा प्रभाग के सदस्य समाज सेवा में रुचि रखने वाले टीचर बहने एवं अन्य भाई बहन there is the social service wing. So those who are keeping interest in doing service in the social wing, so they can attend the meeting. दृष्टिबाधित श्रवण बाधित भाई बहनों की सेवा हेतु एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आज There is a training program for the deaf and dumb. मीटिंग हॉल में रखा गया है। And at 3 p.m. in the Dadi meeting hall, रखते हैं वे दादी जी the service will be kept, and those who keep interest in this service will reach Dadi meeting hall. ईश्वरीय अनुभव की वीडियो भी रिकॉर्डिंग हेतु दिव्यांग सेवा प्रभाग सूर्यमणि भाई से संपर्क करें। कला एवं संस्कृति प्रभाग के सेवाओं की मीटिंग सेवाओं को बढ़ाने के The art and culture wing meeting लिए आज प्रातः and training 9 बजे ट्रेनिंग सेंटर in the morning at 9 नंबर 5 will be in hall number 5. में रुचि रखते हैं और टीचर बहने कला संस्कृति प्रभाग के सदस्य आमंत्रित है। आज सुबह ट्रेनिंग सेंटर में जिन बहनों ने कल जो ट्रेनिंग ली थी गीता पाठशाला Those sisters who had taken training yesterday, नंबर 5 शुरू those who belong to Gita Pathshala, बहुत सारे so today in the morning at 9 a.m. ट्रेनिंग सेंटर हॉल नंबर 1 में they will reach the training center hall number 1. महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना की जिन बहनों ने कल पैड ऑफिस से ट्रेनिंग ली उनके लिए हॉल नंबर 1 में पैड ऑफिस की मीटिंग रखी गई है। इसीलिए वह टीचर्स बहने रात को 8 बजे हॉल नंबर ट्रेनिंग सेंटर हॉल नंबर 1 में पहुंचे।
स्वमान से संपूर्णता की ओर राजयोग मेडिटेशन की नई किताब आनंद भवन के एजुकेशन विंग लिटरेचर से आप प्राप्त कर सकते हैं। आत्म अभिमानी There is a new literature के लिए about the Raj Yoga meditation, and a new video is also being made, and it is available in the YouTube in Hindi and English, छोटे छोटे क्लिप्स and the literature is also आप उस पर देख सकते available at the counter. हैं। रात्रि 8 बजे हॉल नंबर मीटिंग हॉल दादी जी मीटिंग हॉल में घाटकोपर सब जोन के भाई बहनों से नलिनी दीदी जी मिलेंगे। Sister Nalini will meet all those who have come from Ghatkopar today night at 8 p.m. in Dadi Meeting Hall. या नलिनी दीदी जी से मिलेंगे। आदरणीय परम श्रद्धेय ईशु दादी जी के जीवन पर आधारित एक बुक बनी है, ईश्वरीय खजानों के खजांची। अभी तक जिन सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र की इंचार्ज टीचर्स बहनों ने और गीता पाठशाला संभालने वाले भाई बहनों ने ये बुक प्राप्त नहीं की है, वे दादी यीशु जी के रूप विश्व कल्याणी भवन से आज प्राप्त कर सकते हैं। अमृत कुंभ मराठी There is a literature on the biography of Dadi Ishu, and anybody who wants that literature can go to Vishranti Bhavan and collect the book. अमृत कुंभ के स्टॉल पर संपर्क करें। डाइनिंग हॉल के बाजू में स्टॉल लगाया हुआ है। साइंटिस्ट और इंजीनियर विंग आर्किटेक्ट वर्ग की मीटिंग आज प्रातः 9:30 Scientist and Engineering Wing, भवन की Architect Wing, की गई है the meeting will be in तथा इस वर्ग में रुचि रखने वाले भाई बहन will be in the reception, and those who are keeping interest in attending this will attend. Om Shanti. Now we will all sit in Baba's remembrance.